Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mrs. Bushra Mushtaq, PG Psychiatric Nursing, and today I'm with the part second of the previous video, that is sexual and identity disorders. Today I will be taking the rest of the paraphilic disorders, that is transvestic disorder, sexual maturism disorder, sexual sadism disorder, voyeurism disorder, and their predisposing factors. The first, the sexual maturism disorder, it is the same one of the type of the paraphilic disorders, and we can identify the feature of the sexual maturism disorder is the recurrent and intense sexual arousal, which is manifested by same kinds of urges, behaviors or fantasies for at least 6 months of the duration. And from what he gains these sexual arousals or behaviors or urges, from the act of being humiliated, by the act of being beaten, bound or otherwise made to suffer. That is, the person who is suffering from the sexual maturism disorder will gain the intense sexual arousal and will gain the intense urge or the fantasies only if he is being humiliated in the act, if he is beaten, if he is bound or made to suffer, then he gains these sexual arousals. And these fantasies, they involve being raped while held by others, and where there is no possibility of escaping, restraining the individual, blindfold usko karna, cut, beat, इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब या उसके साथ उसको कराना कुछ ऐसी चीज़, क्रॉल कराना या treated as a children. By these fantasies he gains the intense sexual arousals and the urges or the fantasies. And these maturistic activities, as I told you, they may be fantasized by being raped, or by he can also do these type of activities alone also. He may perform these sort of activities alone. For example, self-inflicted pain वो करा सकता है, या with the partner जो उसको restrain करा सकता है या beat कर सकता है. And some maturistic activities have definitely resulted in deaths, in particularly those which have involved in those sort of activities जहाँ पे oxygen deprivation हो. Sometimes you make the you make the other person choke, in that way also. जब oxygen deprive हो जाएगा तो ये वाले जो क्या इसको बोलते हैं activities है वो death भी cause कर सकते हैं. And this disorder is usually very chronic, and it can progress to the point at which this individual cannot achieve the sexual satisfaction by these activities also. So it can be very much chronic at that time. जब उसको सब कुछ उसने ये सब किया भी होगा activities to gain an intense sexual arousal वगैरह, फिर एक point ऐसा भी आता है फिर ये सब करके भी वो उसको वो sexual arousal नहीं मिलता है. That comes in your sexual maturism disorder. And it has also the onset in its early adulthood, immediately after the adolescence. It's very chronic, as I told you, and leads to the injury or the death of the individual also. The next is the sexual sadism disorder, and according to the DSM-5, it identifies the essential feature of this sexual sadism disorder as recurrent
and intense sexual arousal, which are same for every paraphilic disorders, right? Recurrent and intense sexual arousal manifested by same kinds of urges, same kinds of behaviors or fantasies for also at least for 6 months of the duration. But from what he gains this intense arousal? From the physical or psychological suffering of the another individual. जब वो इस एक्ट में दूसरे इंडिविजुअल को सफ़र कराएगा, दूसरे इंडिविजुअल को फिजिकली या साइकोलॉजिकली सफ़र कराएगा, उसको ये इंटेंस अर्जेस होते हैं या इंटेंस सेक्सुअल अरोजल तभी होता है द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर. And this what is called as the sadistic activities जो होती है, जैसे पिछले में थी ये मैचुरिस्टिक एक्टिविटीज़. इसमें sadistic activities may be fantasized और acted on with consenting person के साथ किया जा सकता है या नॉन कंसेंटिंग पार्टनर के साथ भी किया जा सकता है. इन ऑल द इंस्टेंसेस, चाहे वो उसको जानता हो या ना जानता हो, सेक्सुअल एक्साइटेशन तभी होगी इन रेस्पॉन्स जब दूसरा विक्टिम या जब दूसरा पर्सन जब दूसरा पर्सन दैट इज द विक्टिम वो सफ़र होगा, दैट विल सफ़र फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सफरिंग्स. फॉर एग्जांपल सैडिस्टिक एक्ट्स में रेस्ट्रेन आएगा, बीटिंग आएगा, बर्निंग आएगा, सेम काइंड ऑफ रेप, काट, टॉर्चर और इवन किलिंग भी आ सकता है, जो दूसरे पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकता है और उसको सेक्सुअली अरोज कर सकता है. ये वाली सैडिस्टिक उसमें आ सकते हैं. एंड द कोर्स ऑफ दिस डिसऑर्डर इज ऑल्सो वेरी क्रॉनिक with the severity of the sadistic acts often increasing over the time. और ये जो sadistic activities है या sadistic acts है, ये हर एक हर एक मोमेंट के साथ, हर एक टाइम के साथ इंक्रीज होती ही जाती है. एंड likewise if he is doing these sexual acts with any non-consenting partners, then definitely he is punishable, legally. उसको apprehend करके ये वाला relation ख़त्म कर सकते हैं. But if he is doing with the consenting person, then definitely it can lead to the even deaths of the other person also. ठीक है ना. इन नटशेल द सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर जिस पर्सन को होगा उसको अर्जेस तभी आएंगे, उसको सेक्सुअल अरोज़ल तभी होगा जब वो फिजिकली या साइकोलॉजिकली दूसरे अपने पार्टनर को या जो विक्टिम रहेगा उसको सफ़र कराएगा. और सैडिस्टिक एक्ट्स में ये सारे आ सकते हैं. Now the next one is the transvestic disorder. As the word will indicate, trans means to change, right, from one form to another. Vestic, it is from the word vests, which we wear usually. And disorder, transvestic disorders, it involves recurrent and intense sexual arousals with this manifested by same kinds of fantasies, urges or behavior for at least 6 months of the duration. From what? But he receives these intense sexual from dressing in the clothes of the opposite gender. And the individual is commonly a heterosexual man. Yes, heterosexual man जो होता है having heterosexual man having the sex with the opposite gender जो वाला man होता है, वही individual में commonly देखा गया है who keeps on collecting the woman's clothing and he then intermittently uses to dress in when he is alone. ठीक है ना. फिर वो collect करता रहता है ये clothes, फिर जब वो अकेला होता है he used to dresses in this when he is alone. And the sexual arousal may be produced which may accompany him by the fantasy of the individual as or merely viewing himself as fully clothed as a woman. So उसके बाद उसको जब वो fully clothes इख्तियार करता है, उसके full clothes लगाता है woman के, then उसको sexual arousal हो सकता है. And this
disorder causes a very marked distrust to the individual, and definitely it will interfere in the social, occupational and other important functioning. That is why it is the very much common, and also the very much chronic type of the paraphilic disorders. And these type of the persons, they tend to have the very few sexual partners, and they may also engage occasionally in the homosexual activities. हालांकि ये heterosexual man में ज़्यादा होता है, hetero में, but he may indulge in some cases occasionally in the homosexual acts. And they don't actually identify themselves as an opposite sex, but may feel, sometimes they feel guilt or shame about their behaviors and do it secretly. And many married, they also hide it from their wives. They try to have the clothes, or wear the clothes of their wives, and have the sexual arousal in alone, when they are alone, and उस टाइम उनको सेक्सुअल एरोजल होता है. तो ये वाली थिंग्स वो अपने पार्टनर से छुपाते ही है कि व्हाट दे एक्चुअली आर. And this gender dysphoria, that is the gender dysphoria, that is the gender disorder भी इससे इमर्ज हो सकता है. और वो क्या इसको बोलते हैं, they are accompanied by the desire to dress and live permanently as a female. कभी कभी वो क्या इसको बोलते हैं, उस हद तक जाता है कि वो अपने हार्मोनल चेंजेस करते हैं, इंसर्ट करते हैं हार्मोन्स, एंड दे गो फॉर द व्हाट इज़ कॉल्ड एज सर्जरीज, जिसमें वो अपना जेंडर चेंज करते हैं. वो ये उस हद तक भी जा सकते हैं. Next is the voyeuristic disorder. The voyeuristic disorder, जो हम बोलेंगे, it is identified by the recurrent and intense sexual arousals, and which is manifested by the urges, by the behaviors or the fantasies for at least 6 months of the duration, which involves what? The act of observing an unsuspecting individual who is naked in the process of disrobing. Disrobing means to वो अपने he must be changing his clothes, वो change कर रहा होगा, he must be undressing himself or engaging in the sexual activity. उसको इस voyeuristic disorder person को तभी sexual arousal मिलेगा जब वो observe देखता है दूसरे किसी individual को जो कि naked होगा या डिस्टर्बिंग करता होगा. दैट मीन्स उस अपने आपको अनड्रेस करता होगा, या जो दूसरे पर्सन्स को सेक्सुअल एक्टिविटी में देखता होगा, तब उसको ये सारा इंटेंस सेक्सुअल अराउजल होता है उस वाले पर्सन को. एंड नो सेक्सुअल एक्टिविटी विद द ऑब्जर्वर पर्सन इज सॉर्ट, मतलब वो उसके साथ एटलीस्ट कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करता है, बस उसको देखता है वो करते हुए. तो इस इंसान को भी, इस पर्सन को भी इंटेंस सेक्सुअल अराउजल उस टाइम होता है. एंड जिसकी वजह से कैन प्रोड्यूस द मैस्टरबेशन ड्यूरिंग द एक्टिविटी और द लेटर टाइम पे ये हो सकता है. एंड दिस सेक्सुअल एक्साइटमेंट कब अचीव होती है? ये तब अचीव होती है थ्रू द एक्ट्स ऑफ लुकिंग, जब वो देख रहा होता है विद नो कॉन्टैक्ट. नो कॉन्टैक्ट विद द पर्सन इज़ अटेम्प्टेड. वो नहीं जाना चाहता है उसके पास, या बस उसको देखना है, चाहे वो उस टाइम नेकेड होगा या फिर डिस्टर्बिंग करता होगा, वॉट एवर. लेकिन सिर्फ क्या इसको बोलते हैं, उसको एक्साइटमेंट तभी अचीव होती है जस्ट लुकिंग एट हिम. एंड दिस देन यस, मास्टरबेशन जो मैंने बोला वो अचीव हो सकता है. कभी कभी क्या इसको बोलता है, यूजुअली दीज इंडिविजुअल्स गो थ्रू द विंडो पीपिंग, मतलब खिड़कियों से देखते हैं, ठीक है, दूसरों के घर पे या वॉट एवर. एंड ऑनसेट ऑफ दिस voyeuristic behaviors, they occur commonly during the adolescence, and in minimum the age of this diagnosis of this disorder, that is the voyeuristic disorder, is 18 years. and many of the individuals जो इसमें engage होते हैं in type of behaviors में, they have the satisfying, definitely satisfying sexual relationship with the adult
पार्टनर्स, ठीक है ना, वो क्या उसको बोलता है, एंड अच्छा रिलेशन रहता है उनको, बट दे कंटिन्यू दीज थिंग्स टू विंडो पीप टू द अदर्स, एंड दे गेन द सेक्चुअल arousal through these kinds of the things, like to see the other person naked, or to see the other person disrobing or in the sexual activity. Now, the predisposing factors for the paraphilic disorders. What are the main predisposing factors for this paraphilic disorders? The first factor is the biological factor. There are various studies which have implicated several organic factors. जिन्होंने ये पाया गया है, several organic factors पाए गए हैं कि इसमें etiology हो सकती है, कॉजिंग फैक्टर हो सकता है इन द पैराफिलिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि क्या इसको बोलते हैं, हम अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम इन एनिमल्स, वो भी दिखाता है कि उस दैट लीड्स टू द कॉज ऑफ हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर्स, या टेम्पोरल लोब डिजीज़ हो सकता है जिसकी वजह से सच एज साइकोमोटर सीजर्स या टेम्पोरल लोब ट्यूमर्स हो सकते हैं, वो भी इम्प्लिकेट करते हैं कुछ इंडिविजुअल्स में, उनको पैराफिलिक डिसऑर्डर हो सकता है, या abnormal level of androgens होंगे, they may also contribute in the inappropriate sexual arousals, and majority of these studies have been involved जिसमें violent sex offenders होते हैं, and yet these studies cannot be generalized in the general populations, क्योंकि ये हमें वही studies जो हम sex offenders से लिया गया है. This was the biological factor. The second is the psychoanalytical theory. Psychoanalytical theory या अप्रोच हम कह सकते हैं, वो भी डिफ़ाइन करती है इन इंडिविजुअल्स को विद द पैराफिलिक डिसऑर्डर्स. वो इंडिविजुअल्स जो यूजुअली नॉर्मल जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है, जैसे कि फ्रॉड ने बताया कि किस तरीके से साइको एनालिटिकली स्टेजेस बाय स्टेजेस डेवलपमेंट होती है, या सुलिवन ने बोला है हाउ द डेवलपमेंट ऑकर्स इन वेरियस फेजेस, लेट इट बी द ओरल फेज, लेट इट बी द दिस व्हाट इज कॉल्ड एडोलेसेंट फेज और द अडल्ट फेज, किस तरीके से ये डेवलपमेंट होती है. अब वो साइको एनालिटिकल अप्रोच के ज़रिए से ये भी पाया गया है कि जो इंडिविजुअल ने नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या इसको बोलते हैं, दे आर नॉट करेक्टली गोइंग थ्रू द नॉर्मल डेवलपमेंट, हु हैव फेल्ड द नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस टुवर्ड्स व्हाट इज कॉल्ड एज हेटेरोसेक्सुअल एडजस्टमेंट, उनको ये वाली प्रॉब्लम्स हो सकती है. एंड समटाइम्स जैसे ऑडिपल क्राइसिस होता है, जो आपने साइकोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा होगा, ऑडिपल क्राइसिस के बारे में उधर रहा होगा कोई क्राइसिस, या उसने आइडेंटिफाई किया होगा पेरेंट ऑफ द अपोजिट जेंडर, और ही मे हैव समटाइम्स ऑब्जर्व्ड समथिंग इन द पेरेंट्स, उसकी वजह से खुद की लिबिडो को कैथारसिस करने के लिए उसमें ये वाले सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं. साइको एनालिटिकली ये एक्सप्लेन हुआ है. नेक्स्ट बिहेवियर थ्योरी भी कुछ एक्सप्लेन करती है रिगार्डिंग द व्हाट इज़ कॉल्ड एज सेक्सुअल बिहेवियर मॉडल. अगर हम बोलेंगे दैट वेदर द इंडिविजुअल engages in paraphilic disorders, it depends on the type of the reinforcement जो उसको मिला होगा फॉलोइंग द बिहेवियर. फॉर एग्जांपल उसने कुछ बिहेवियर किया, अब उसको पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट मिला या नेगेटिव रेइंफोर्समेंट, क्योंकि बिहेवियर थ्योरी तो वैसे ही बनती है ना. फॉर एग्जांपल हाउ यू माइंड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, आप बच्चे का बिहेवियर कैसे करेक्ट करोगे. अगर आप उसको बोलोगे कि आप ये वाली एक्टिविटी करो, मैं आपको पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट दूंगा, चॉकलेट दूंगा, या आप वो कोई एक्टिविटी करेगा आप उसको पनिश करोगे, इन दैट सॉर्ट ऑफ उसकी वजह से उसका बिहेवियर डेवलप होता है. इन द सेम वे वही या डिपेंड करता है कि आपने इंडिविजुअल को किस टाइप ऑफ रेइंफोर्समेंट मिला है, उस हिसाब से वो पैराफिलिक बिहेवियर डिसऑर्डर इनहिबिट कर सकता है. एंड क्या इसको बोलते हैं, जैसे कि रिकॉलिंग मेमोरीज ऑफ द एक्सपीरियंस फ्रॉम द इंडिविजुअल्स ऑफ इनिशियल लाइफ. कभी कभी
क्या इसको बोलते हैं कोई एनेक्ट करता है या इनिशियल एक्ट है, एक बार हुआ होता है कोई एक्ट, फिर इंडिविजुअल विद द पैराफिलिक डिसऑर्डर्स दे कॉन्शियसली इवैल्यूएट द बिहेवियर एंड डिसाइड्स वेदर टू रिपीट इट और नॉट। किसी तरीके से अगर उसने कोई बिहेवियर कभी किया होगा समटाइम्स फॉर द एन्जॉयमेंट या इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, एंड देन ही डिसाइड्स वेदर टू रिपीट इट और नॉट। इफ़ ही अगर उसने उस टाइम उसको मिला होगा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, मज़ा आया होगा, एंड ही इज़ नॉट स्कॉल्डेड बाय एनीवन, एंड ही इज़ नॉट, मतलब उसको किसी ने कुछ बोला नहीं होगा या किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, तो उसको वो रहता है दिमाग में, सो वो ये बिहेवियर में भी शायद कंटिन्यू कर सकता है। या कभी कभी फियर होता है पनिशमेंट का या परसीव्ड हार्म का या इंजुरी का टू द विक्टिम, या लैक ऑफ प्लेजर नहीं मिलेगा उसको फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, ठीक है ना। एक बार किया फिर उसको नहीं मिला वो सॉर्ट ऑफ प्लेजर जो वो चाहता है, या उसको उस टाइम पनिशमेंट मिली होगी, या उस टाइम उसको कुछ दर्द हुआ होगा, हार्म हुआ होगा, तब वो इस बिहेवियर को रोक सकता है। सो इट इज़ द वे बिहेवियर उसका आगे जाएगा इसमें कि नहीं, वो डिपेंड करेगा कि इसको उस टाइम कैसा रेनफोर्समेंट मिला होगा। अगर उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिला होगा वो डेफिनेटली इस बिहेवियर को रिपीट करेगा, अगर उसको नेगेटिवली बिहेवियर मिला होगा तो इसको क्या इसको बोलते हैं, वो इस बिहेवियर को स्टॉप करेगा इमिडिएटली। देन ट्रांजिशन मॉडल या एडेप्टेशन स्ट्रेस मॉडल, तो इसने भी कुछ इटियोलॉजिकल पॉइंट्स रखे अबाउट द पैराफिलिक डिसऑर्डर्स। उसने बोला कि इंटीग्रेशन होती है, इट इज़ नॉट जस्ट कि क्या इसको बोलते हैं वन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इट इज़ अ मैनी फैक्टर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्चुअल डिसऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल लर्निंग एक्सपीरियंस, उसका सोशो कल्चरल फैक्टर्स या उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस, दे ऑल अकाउंट फॉर द डिविएंट सेक्चुअल बिहेवियर्स, एंड अ कम्बिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल, psychosocial, cultural factors, and along with the learning experience, along with the learning paradigm, वो सारा इकट्ठे क्या इसको बोलते हैं, जब ये ट्रांजैक्शन होती है, मतलब when one individual passes from one stage to another, या कभी कभी स्ट्रेस में होता है इंसान, इट्स नॉट द बायोलॉजिकल फैक्टर ओनली जो इसको लीड कराएगा टुवर्ड्स एनी सेक्चुअल डिसऑर्डर, नो, इट इज़ द साइकोसोशल फैक्टर बिहाइंड दैट, लर्निंग फैक्टर हो सकता है, many factors which are responsible together for the individual having this sexual or creating the sexual disorder. That was all in this video. I will be continuing with the third part of the video soon, inshallah taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.